Good morning dear students. Today we are going to start fourth part of our chapter 5, that is the capacitors. Our today's topic is the parallel plate capacitor. We have the parallel plate capacitor. Parallel plate means we have the two plates. These are placed parallel to each other. Let us suppose plus Q is the charge on the plate A and minus Q is the charge on the plate B, and D is the separation between the plates, and let us suppose area of cross section of the each plate is the A. Now we have to calculate the capacitance of this combination. Now we are going to start with the relation E is equal to dV by dr that we have derived in the chapter number 4. Fourth chapter च असी relation derive किया सी E is equal to minus dV by dr. Negative sign just की दिंदा सी direction. We are taking only magnitude. We have only magnitude. E is equal to dV by dr. Now in this case let us suppose V is the potential between the plates. इन्हां दोनों plates के विचकार potential कितनी है V and distance कितना है D. Then according to that E will be equal to V upon D or V is equal to ED. Equation number 1. Now next is the, all of you knows that असी Gauss theorem वाले chapter च कढ़िया सी the electric field between the two plates, plate A and B, having the surface charge density plus sigma and minus sigma. In this case area of cross section is the same for plate A and B. Similarly charge on the each plate is same, then the surface charge density will be also same. So E सानू पता कितना हुंदा, E is equal to sigma upon epsilon naught. Sigma upon epsilon naught. E की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1. From here you will get V is equal to sigma by epsilon naught into D. क्लियर. नाउ सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हैं असी. V इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू होंगी तुहाडे कोल Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D और V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D. नाउ वट इज़ द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस. C इज इक्वल टू Q बाय V. असी लास्ट लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय Q अपॉन V. तो C की वैल्यू कितनी आ गई थी Q upon epsilon naught A into D. From here Q goes with Q and you will get C is equal to epsilon naught A upon D. This is the capacitance of the parallel plate capacitor. In this case असी इस प्लेट से दोनों प्लेट से विचकार कोई मीडियम नहीं कंसीडर कर रहे. There is only air or the vacuum. This is the first case. The capacitance of the parallel plate capacitor between the plates such that there is a vacuum or the air between the plates. In this case the C will be equal to epsilon naught A upon D. Clear? Now next one ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ extend ਕਰੀਏ ਤਾਂ we have to calculate the capacitance of parallel plate capacitor when the dielectric slab is placed between the plates. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ extension ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. The capacitance of parallel plate capacitor with the dielectric slab between its plates. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ है, इस कैपेसिटर ਦੀਆਂ प्लेट्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਤੀ ਇੱਕ डायलैक्ट्रिक स्लैब प्लेस करांगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द कैपेसिटेंस. ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ. नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट A and प्लेट B. प्लेट A हैविंग द प्लस चार्ज एंड प्लेट B कोल किहड़ा चार्ज है तुहाडे कोल नैगेटिव चार्ज. लेट अस सपोज D इज द सैपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड हम असीं इत्थे की रखती एक डायलैक्ट्रिक स्लैब प्लेस करती. डायलैक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ थिकनेस T. असी कंप्लीटली नहीं फिल किया. वी हैव प्लेस्ड partially or we have partially filled the space between the two plates with the dielectric slab. And let us suppose in the air electric field is E naught and inside the dielectric slab the electric field is E. ये असी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. E naught minus P upon epsilon naught. E नू की नाम देने असी, that is called the reduced value of electric field. Now to start with,
जे साडे कोले जस्ट एयर सी तो कैपेसिटेंस कितनी आ रही सी इनू मैं लिख रही है सी नॉट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओनली विद एयर बिटवीन द प्लेट्स इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर तो असी स्टार्टिंग इदा ही करांगे जिवें असीं इत्थों कड्ढी सी देखो वी हैव कैलकुलेटेड द वी लाइक दिस वी असीं कड्ढिया सी ई इंटू डी वी हैव कैलकुलेटेड वी इज इक्वल टू ई इंटू डी हुण इत्थे भी पहलां असीं पोटेंशियल कड्ढनी है बट हुण इहदे च की है एरियाज डिवाइड हो गए इहदी टी डिस्टेंस दे विच डायलैक्ट्रिक पिया एंड डी माइनस टी च की पई है एयर पई है तो उहदे अकॉर्डिंग पोटेंशियल की आऊगी तुहाडे कोल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू टी टी की है तुहाडे कोले थिकनेस ऑफ द डायलैक्ट्रिक स्लैब तो इस डायलैक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड कितना ई तो इन्ने रीजन के विच तुहाडे कोले जिहड़ी पोटेंशियल कितनी होगी ई इंटू टी प्लस पोटेंशियल जिहड़ा बाकी पोर्शन बच गया उहदे कितनी होगी तुहाडे कोल ई नॉट इलैक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि बाकी पोर्शन च की पिया एयर पे एंड डिस्टेंस कितना है डी माइनस टी. नाउ नेम इट इक्वेशन नंबर 2. हुण सानूं एक डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन पता होगा काहदी इक्वल हुंदी है ई नॉट अपॉन ई. फ्रॉम हियर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई के. ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो. फ्रॉम हियर यू विल गेट ई नॉट बाई के इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी. ई नॉट टेक कॉमन. फ्रॉम हियर यू विल गेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. जस्ट मैं जिहड़ियां टर्म्स नूं रीअरेंज करके लिखता है. नाउ ई नॉट की वैल्यू सानू की पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है. ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. सिग्मा की वैल्यू की है क्यू अपॉन ए. डी माइनस टी प्लस टी बाय के. नाउ वी हैव कैलकुलेटेड वी. नैक्सट स्टैप की है साढ़े को सी कढ़नी है. सी का इक्वल होंगी है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू मूव ऑन दिस साइड. Now C will be equal to Q upon, put the formula for the V, Q upon epsilon naught A D minus T plus T upon K. Q goes with Q. From here you will get C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. This is the formula for the capacitance of the parallel plate capacitor when the dielectric slab is placed between its plates. Or in more simplified way करिए असी take D common from here. You will get C is equal to epsilon naught A upon D minus, I am going to write it as the D minus of t plus t by t. D minus t plus t by k. We can write like this. D minus t plus t upon k. Now take t common from here. You will get C is equal to epsilon naught A upon D minus T 1 minus 1 by K. D minus T 1 minus 1 by K. Now if T is equal to D मतलब जो डायलैक्ट्रिक स्लैब ने completely स्पेस नू फिल करता between the two plates. D is equal to T put here. C is equal to epsilon naught A upon D minus D of 1 minus 1 by k. From here you will get C is equal to epsilon naught A D minus D plus D by k. D goes with D, k ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा epsilon naught A upon D into k. A की वैल्यू है C naught. C naught was the capacitance of the parallel plate capacitor when there was the no dielectric. From here you will get C is equal to K times C naught. And all of you knows K is always greater than 1. It means when the dielectric slab is placed between the two plates of the capacitor, its capacitance will increase. From here we will continue in the next lecture. Thank you.